Good evening, everyone. Welcome to your favorite YouTube channel, Unacademy GATE MEPIXE. This is your educator, Aprup Rao, and you are watching the lecture series of Strength of Materials. This is lecture number 21, Deflections of Beams, Part 4. Yes, we have already seen 3 lectures on deflection of beams in which I have explained different methods of calculating slope and deflection. In lecture number 1, we saw double integration and Macaulay's method. In lecture number 2, we saw moment area method. In lecture number 3, we saw the strain energy method. And today, we are going to discuss how to calculate slope and deflection directly using the formula. So I am going to give you a list of the formula that you need to memorize, and then we are going to see how we can use this formula to solve the problems in GATE. Because beta, most of the times you will get formula based questions, direct formula based questions in objective exams. For example, GATE, ESE or any PSU exams, 70 to 80% questions will be direct formula based, where you don't need to apply any of the 3 methods that we have discussed so far. You just need to put the direct formula. But don't think that those methods are not important, because 20 to 30% times you might get questions where you need to use those methods. Okay, so those methods are also very important to discuss, and these formula are also important to memorize. Okay, so today's chapter is all about, today's session is all about solving problems using the direct formula of slope and deflection. And we are also going to discuss how to find reactions in statically indeterminate beams. Yes, you heard me right. Statically indeterminate beams are very important topic, and we are going to discuss them in today's session. So beta, don't delay, just hit the like button right now and share this link with all your friends and let them know what we are going to cover today. Let them know that we are live. We need your support in order to grow. I have been telling you this again and again and again. आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो बेटा इसमें कंजूसी मत बरतना. लाइक तो सबसे पहले हिट कर दो, और कम से कम एक बार इस लिंक को कॉपी करके किसी ना किसी ग्रुप में जाके आप शेयर कर दो, जहां कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा, कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको वाकई में इन लेक्चर्स की जरूरत होगी. ठीक है, सो डोंट डिले एंड शेयर दिस लिंक विथ योर फ्रेंड्स. गुड इवनिंग हर्षित, गुड इवनिंग मनीष, आशुतोष, तुषार, जय किशन, श्रीनिवास, प्रसाद, पठान. Good evening, good evening, good evening, good evening, Ayush. Okay. So those of you who are watching me for the first time, let me introduce myself. My name is Aprup Rao, All India rank 320 in GATE Mechanical. I have done my MTech from IIT Kharagpur, and my specialization of PG was Mechanical Systems Design. Yes, I have studied the subjects of design in detail in my post-graduation. Then I have worked at Mahindra Research Valley, where the cars and tractors of Mahindra and Mahindra are designed. So again, my work experience is also related to design. And after 2 years, I quit my job and I started teaching. So I have 6 years of teaching experience for GATE and ESE. And again, I teach subjects related to design. So you can see that my expertise has always been in design. But this is not important. This is not why I am here. I am here because of my love and passion for teaching, my love for the subjects of design. And if you are following my lectures regularly, then I can guarantee that you will also fall in love with design, and your concepts of design will be crystal clear. And those of you who have been following my lectures have experienced this. Yes or no? Yes or no? Tell me in the live chat. Yes or no? Am I correct or no? Good evening, Namita. Good evening, Siddhant. Okay. Now beta, if you want to download the ebooks and the lecture notes of my subjects, then just go to tinyurl.com/aprup10. Open your web browser and type tinyurl.com/aprup10. This is the gold mine of my subjects. EM, MD, SOM, TOM, whatever design subjects you want to study, every content that you need will be here in tinyurl.com/aprup10. ये मेरे subjects की एक खदान है बेटा. अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितना कंटेंट आपके लिए चाहिए किसी भी डिजाइन के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा. आपको मिल जाएंगी ई बुक्स, और साथ में आपको मिल जाएंगे ऐसे एक्सेल शीट्स जिसमें मैंने अपने सारे लेक्चर्स के लिंक और पीडीएफ की लिंक काफी ऑर्गेनाइज तरीके से डाल दिए, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग
you will find here in a very organized manner. Okay, so I have put all my special class links in one Excel sheet, and then I have put all the links of my YouTube classes subject wise in these Excel sheets. So if you open any Excel sheet, you will see that it is not just an ordinary Excel sheet, it is a digital book. ये एक नॉर्मल एक्सेल शीट नहीं है बेटा, ये एक डिजिटल बुक है, क्योंकि यहां आपको सारे लेक्चर्स उस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे कंप्लीट सिलेबस के साथ, और आपको उनकी YouTube क्लास की लिंक मिल जाएगी और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी. You will find the YouTube class link and the PDF link in these Excel sheets, lecture by lecture, in a very organized manner. Okay, so you have the digital book of engineering mechanics, digital book of machine design, and digital book of strength of material, which is an ongoing course. This is lecture number 21. We still have a lot more lectures to complete the syllabus, but whatever I have covered till now, I have put here beta the YouTube class link, the PDF link, and for strength of material specially, because it is an ongoing course, I also have uploaded the DPP link. DPP means what? Daily practice problems. So whenever we need some additional problems to solve, then we practice those problems in these Unacademy free special classes. Free special classes which everyone can join. Just click on this link and you can join these sessions. Okay, so beta, whenever we need additional problems to solve, we are solving those problems in this Unacademy free special class. For example, tomorrow also you have a free special class on the DPP of deflection of beams. I have already taken 2 DPPs on deflection. Tomorrow is the third DPP of deflection at 4 p.m. At 4 p.m. and everybody is invited to join. Okay, so beta, you will find all these YouTube class links, PDF link and DPP link in this Excel sheet. Okay, so this is a gold mine of my subjects. Please bookmark this and share this link with your friends also, and tell them that they will find everything here. सारे सब्जेक्ट्स के डिजाइन के सब्जेक्ट्स के कंटेंट जो है वो उनको यहीं मिलेंगे और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो है वो यहीं है. ओके, and if you don't want to miss any of my lecture, whether on YouTube or Unacademy free special class, just follow this Telegram channel. Go to your Telegram app and search for Approved 10. You will find my channel, or just open your phone camera and scan this QR code and you will find my Telegram channel, in which I am going to notify you about all my classes. इस Telegram channel में मैं अपने सारे classes की link डालने वाला हूँ, मेरे YouTube की classes की link, मेरी free special classes की link. तो जब भी मैं कहीं पे भी कोई भी क्लास लूंगा, आप मिस नहीं करोगे अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो. ओके, सो ओपन योर टेलीग्राम चैनल and search for Approved 10 and join right now. I am telling you, you will get benefited because I have been taking classes on YouTube and Unacademy free special classes to cover all these subjects. Okay, complete coverage. Okay, now where were we? So we started with deflection of beams. Deflection of beams में we need to calculate the slope and deflection of beams, right? Wherever it is maximum. Okay, what is slope? Slope means if I draw a tangent at any point, then what is the angle of that tangent with horizontal? That is known as slope. So this is slope at A. And what is deflection? Let's say there is a point C on the beam. Initially it was here and now it is here. So this distance is known as the deflection at point C. And what is this curve? Bend होने के बाद ये जो curve बनता है, this is known as elastic curve, right? Beam के bend होने के बाद whatever curve we get, that curve is known as the elastic curve. Yes? Okay. Now beta, we discussed 3 methods to calculate the slope and deflection, right? Double integration and Macaulay's method, although these are 2 different methods, but they are so similar to each other that I am calling them as a single method. ये इतने एक दूसरे के इतने करीब है, ये एक दूसरे से इतने सिमिलर है, क्योंकि Macaulay's method is nothing but the modification of double integration method. तो इसीलिए मैं इनको एक ही मेथड अज्यूम करके चलता हूं, मान करके चलता हूं. तो डबल इंटीग्रेशन Macaulay's method फर्स्ट क्लास में हमने किया, then in the second class moment area method, and in the third class, in the last class, we have covered strain energy method, right? And I have also given you an assignment, I have not forgotten. So let's see what is the solution of this assignment. ठीक है, इसका solution क्या है ये एक बार देख लेते हैं. तो बेटा, I have given you this problem. What is the vertical displacement of point Q of the structure shown in figure given below? Assume flexural rigidity equals to EI. Okay. So beta, in this case, what we are going to do, understand. Okay, I am going to consider a very small length
ऑन दिस कर्व, ठीक है, ये एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है, ओके, ये एक सर्कुलर कर्व्ड स्ट्रक्चर है। तो इस कर्व्ड स्ट्रक्चर में मैं एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूं। लेट्स कंसिडर दिस एलिमेंट, ओके, लेट्स कंसिडर दिस एलिमेंट, एक बहुत छोटा एलिमेंट, ओके, एट एन एंगल थीटा, ठीक है, मान लो ये थीटा एंगल पे, ओके। नाउ the length of this is ds and this angle subtended by this element at the center is, let's say, d theta, okay. Now what do we need to calculate? We need to calculate the bending moment, and in order to calculate the bending moment I need the distance, okay. So beta, if this is r, what will be this distance? This will be r sin theta, ये मैंने थीटा लिया हुआ है। सो इफ दिस इज r then this will be r sin theta. So what will be the equation of bending moment? Bending moment will be w into r sin theta, right? Now we need the vertical deflection at point q. So beta, in that case I will differentiate m with respect to w, so it will become r sin theta, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है, बेटा लाइक बटन दबा दो सबके सब अभी के अभी। एवरीवन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक because the attendance is very low right now, so I want maximum number of attendance, okay. So please share the link with your groups, del m by del w will be r sin theta, okay. Now beta, the length of the element is ds not dx, ठीक है, length of element क्या है, ds है, dx नहीं है। तो यहां पे ds की वैल्यू मुझे थीटा के टर्म्स में निकालनी है, बिकॉज आई वांट टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ds, ओके। सो व्हाट विल बी ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, ds विल बी इक्वल टू दिस आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू r d थीटा, राइट। यूजुअली एलिमेंट की लेंथ हम dx लेके चलते हैं, राइट। यूजुअली वी टेक द डिस्टेंस लेंथ ऑफ द एलिमेंट एज x बिकॉज द मेंबर इज स्ट्रेट। तो स्ट्रेट मेंबर है तो हम लेंथ लेते हैं dx, बट ये कर्व्ड मेंबर है तो ये लेंथ ds है, and in terms of theta it will be r d theta, okay. Now what is our equation of calculating the deflection? So y at point q will be equal to integration m into del m by del w into ds divided by ei. Remember I told you that the length of the element is not dx, it is ds, okay. Now beta, put the values in this equation. So what will be m, w r sin theta, w r sin theta, then del m by del w is r sin theta, then ds is r d theta divided by ei. And what will be the limit of theta? Theta here will be 0 degree and theta यहाँ पे कितना होगा 0 degree and theta यहाँ पे कितना होगा, what will be theta here? From here to here we need to integrate. So 0 to what? 0 to pi by 2, right? Not 90, okay. We need to put theta in radians. So theta will be 0 to pi by 2, okay. So beta, what will be yq? So whatever is constant, let's take it out of the equation. So I will get w then r cube divided by ei. अंदर बचेगा, you will get 0 to pi by 2 sin square theta d theta, right? Now we can't integrate sin square theta directly, okay. What I need you to do is I need you to convert this in cos 2 theta. तो अगर मैं इसको cos 2 theta में convert करूं, if I convert it into cos 2 theta, what I am going to get? I am going to get 1 minus cos 2 theta by 2, right? 1 minus cos 2 theta by 2, sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2 and cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2, okay. So beta, now we can integrate it, तो ये 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं. So I am going to get w r cube by 2ei. I am going to get w r cube by 2ei. Now if I integrate 1 with respect to theta, I am going to get theta, and if I am going to integrate cos 2 theta, I am going to get sin 2 theta divided by 2 from 0 to pi by 2. ठीक है. तो बेटा यहाँ पे if I
put the value here. So if I put theta equal to pi by 2, this will become pi by 2 and 0, right? This will become WR cube by 2EI. ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है, लोअर अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, ओके, तो ये 1 बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो साइन पाई कितना होगा, व्हाट विल बी साइन पाई, आई थिंक साइन पाई इज 0, साइन 180 डिग्री इज 0, यस 0, एंड साइन 0 इज ऑल्सो 0, राइट? So beta, what you are going to get? You are going to get yq equals to pi wr cube. Yq equals to pi wr cube upon this 2 will be 4ei. So this is the vertical deflection at point Q. Pi wr cube by 4ei. Pi wr cube by 4ei. Is this correct? Yes. Yes. Very good, very good. Good evening everyone. Please share the link, call all your friends, let all your friends know that we are live deflection of beams part number 4, and today we are going to solve problems using direct formula, and we are also going to see how to solve statically indeterminate beams. Okay, तो ये question clear है बेटा? ऐसे आर्क वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं, whenever you see these types of problem where the structure is not linear, it is circular arc form, तो बेटा उस केस में you have to do the problem like this. Okay, आपको थीटा के टर्म्स में इसको इंटीग्रेट करना है. Is it clear? So बेटा you will see these types of problems in exam. ठीक है, इस टाइप के problems भी आप expect कर सकते हो एग्जाम में. Okay, तो बेटा now we have solved all the problems using these three methods. Okay, now direct formula. But you don't need to remember each and every formula. Okay, there are some specific cases for which you need to remember the formula, and I have tabulated all those cases. Okay, मैंने उन सारे cases को टेबल के फॉर्म में यहाँ पे बना दिया है. You can take the screenshot right now so that we can use them in solving the problems. ठीक है, अगर आप चाहो तो अभी screenshot ले सकते हो ताकि हम आज के problems में इन फॉर्मूला को यूज कर सकें. ठीक है, तो मैं स्क्रीन से हट चुका हूं, तो आपके पास टाइम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी के अभी. ओके, सो बेटा you can see 3 cases of cantilever beam here. First case is when there is only a point load. When there is only a point load W at the free end, in that case theta max is WL square by 2EI, Y max is WL cube by 3EI. Then we have cantilever beam with UDL over the entire length. So theta max is WL cube by 6EI, Y max is WL to the power 4 by 8EI. Then we have cantilever beam with uniformly varying load 0 to W. Theta maximum WL cube by 24 EI, Y maximum WL to the power 4 by 30 EI. Okay, and then we have cantilever beam with a couple at the free end. Theta maximum ML by EI, Y maximum ML square by 2 EI. So these are the 4 cases of cantilever beam where theta maximum and Y maximum will be developed where it will be at the free end. Okay. Now in case of simply supported beam, you only need to remember the 2 cases. Simply supported beam with symmetric loading. One is there is a point load W at the center, theta maximum WL square by 16 EI, Y maximum WL cube by 48 EI, and the second one is simply supported beam with UDL, theta maximum WL cube by 24 EI, Y maximum 5 WL to the power 4 by 384 EI. Okay, and in these cases, in these 2 cases, theta maximum will be at the end and Y maximum will be at the center. Okay. So beta, these are the 6 cases for which you need to remember the formula of theta maximum and Y maximum. Now don't ask me a trick to remember this because there are tricks to remember them. But beta, in order to remember, in order to use those tricks, you will have to remember the tricks itself. ठीक है, अगर ट्रिक ही भूल जाओगे तो फिर उस ट्रिक को यूज कैसे करोगे? तो डिपेंडेंट मत रहो किसी भी ट्रिक पे. वैसे भी ये टेबल बहुत आसान है, 6 कॉलम्स हैं. ठीक है, मतलब 6 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं. आपको करना क्या है? आपको बस ये कांस्टेंट याद रखना है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू नीड टू रिमेंबर दिस कांस्टेंट ओनली. 2 3 6 8 24 30 1 2 16 48 24 5 by 384. Okay,
and if you solve enough number of problems based on this, then you will automatically remember them. ठीक है, तो कोई बेटा इसका कोई ट्रिक वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा टेबल है, ट्रिक अगर याद भी करोगे तो थोड़े टाइम बाद ट्रिक ही भूल जाओगे, तो फिर वो ट्रिक को यूज करके इसको क्या याद रखोगे, ठीक है, तो आपको फिर ट्रिक याद करने के लिए एक और ट्रिक बनानी पड़ जाएगी, ठीक है, तो ट्रिक टू द पावर इंफिनिटी हो जाने वाला है, तो आपको यहाँ पे किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप सीधे साफ ये टेबल लिखो, इस टेबल के फॉर्म में इसको लिखो, सुंदर सा एक टेबल बनाओ, घर में दीवार पे चिपकाओ। आपको एक बहुत अच्छा सजेशन दे रहा हूं मैं, बिकॉज आई हैव सीन दिस done by a lot of students and they were topper students, okay, good rank holders. So what they used to do is, whenever they had very important formula, they used to write it in a neat and clean paper, okay, with colorful pens and all, and they used to stick it on their wall, okay. तो उससे होता क्या है कि जब भी आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, एक नजर आपकी वहां पे जा रही है, बेटा ये याद रखना, whatever we see we can remember them for a very long time, ठीक है, जो भी आप चीजें देखते हो, बार बार अगर देख रहे हो, subconsciously they get feeded in your mind, okay, subconsciously आप रट नहीं रहे हो, रोज वहां जाके रटना नहीं है, दीवार पे खड़े होके 5 मिनट रट्टा मार रहे हैं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बट रोज उठते बैठते अगर आप एक झलक देखोगे, if you see that every day, sitting, standing up every day, then beta you will remember them, okay. So whenever you have a set of equations, a set of formulae which is very important and which is difficult to remember, you can do this, okay. थोड़ी गंदगी मचेगी, बट घर वालों को बोल देना बेटा एक बार मेरी रैंक आ जाए फिर मैं खुद ही सब कुछ साफ कर दूंगा, पुताई भी खुद ही कर दूंगा, okay. White wash you will do yourself, tell your parents, they will not say anything, okay. So you need to remember these 6 set of equations, okay. Now I will tell you how to use them. अब इनको यूज करने के लिए, in order to use them in a regular problem, we need to see some concepts, okay. Additional concepts are there in order to use this formula, and out of those additional concepts, the most important is principle of superposition. Now we have discussed principle of superposition before this also, हमने इससे पहले भी principle of superposition use किया हुआ है और मैंने आपको बताया है principle of superposition क्या होता है. What is principle of superposition? So understand, principle of superposition says that if there are more than one type of load acting on the body at the same time, then in order to calculate the stress and deflection, I can separately consider all the loads, calculate the stress and deflection and then add them. अगर आपको एक से ज्यादा लोड से स्ट्रेस निकालना है या डिफ्लेक्शन निकालना है, तो सबसे अलग अलग स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन निकाल लो, सेपरेटली आप कंसीडर करो सबको and then you add them, okay. So beta it will give you a very accurate answer, okay, not exactly true answer, but it will give you a very accurate answer, close enough answer, okay. So for example, let's say a cantilever beam is subjected to a point load W and a couple M, point load W, couple M, and we need to calculate maximum slope and deflection. Maximum slope and deflection matlab we need to calculate slope and deflection at this free end A. So what we can do is, in order to calculate slope and deflection by W and M, I will separately consider them. मैं इनको separately consider करूंगा. So in one case I will consider W and in one case I will consider M, okay. Now we need to just add the slope and deflection in both these cases and we will get the total slope and deflection, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, whenever you are doing this, whenever you are applying principle of superposition, you should be very careful about the direction, whether the beam is bent in the same direction by both the loads. अगर दोनों लोड से सेम डायरेक्शन में बीम बेंड हो रही है, so both will be of same sign, दोनों का साइन सेम होगा. अगर ऑपोजिट बेंडिंग हो रही है तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव. इफ द बेंडिंग इज ऑपोजिट, फॉर एग्जांपल इफ M is in opposite direction, so W will bend the beam downward and this M will bend the beam upward if the M is opposite. So in that case, if you are considering this positive, then this will become negative, okay. But in this case, in my example, the beam will be bent downwards by both the loads. So beta, if let's say I need to calculate theta, then what will it be? Due to W, what will be theta? W की वजह से theta क्या हो जाएगा? WL square by 2EI, WL square by 2EI, and due to M, M की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? ML by EI, ML by EI, okay.
So this is principle of superposition. I calculated theta due to this and theta due to this, and I added them. Similarly, YA. So beta, what will be the deflection due to W? So deflection due to W will be WL cube by 3EI. WL cube by 3EI. And what will be the deflection due to couple? ML square by 2EI. ML square by 2EI. Okay. So now you have a direct formula to calculate slope and deflection in this case. Okay. So whenever there are more than one loads acting on the beam, then you can use this principle of superposition. Principle of superposition has its limitation. When we can apply principle of superposition के लिए क्या requirement है? Principle of superposition के लिए सबसे important ये है that there should be no plastic deformation. Okay, the deformation should be elastic, completely elastic, and it should be small. Okay, deformation जो है बहुत छोटे होने चाहिए और elastic होने चाहिए. Then only we can use principle of superposition. Okay, so beta, you can see that in every case we assume that stresses are within proportional limit. So it is applicable in our case. It is applicable in our case. Okay. Now, the next very important concept that we are going to discuss. अब जो दूसरा concept हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो बहुत important है, and a lot of questions are based on this concept. So it is this concept. Let's say we have a cantilever beam which is subjected to point load W, but not at the free end. The load W is not acting at the free end, it is acting at some distance from the free end, and we need to calculate theta A and YA. Now the problem is, I don't know a direct formula for this. I can use any of the three methods, but I can't use the direct formula. Now let's say I want to use direct formula. मान लो मेरे को कोई भी method नहीं आता, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाना चाहता हूं. सो हाउ आई कैन सॉल्व दिस? सो बेटा रिमेंबर, वी हैव द फॉर्मूला फॉर दिस केस. हमारे पास इस केस का फॉर्मूला है. सो सॉरी फॉर दिस, सो सॉरी. हाँ, एक से. ओके, तो हमारे पास इस केस का फॉर्मूला है जहां पे W इज एक्टिंग एट द फ्री एंड. ठीक है, अगर W फ्री एंड पे लग रहा है तब तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है. ओके, लेट्स से W इज एक्टिंग हियर, देन वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला. So I can calculate theta B and YB. I can calculate theta B and YB for this case. ठीक है, इस केस के लिए theta B और YB तो मैं निकाल लूंगा, but I can't calculate theta A and YA directly. Okay, let's consider any length. मैं कोई एक length consider कर लेता हूं. तो मैं मान लेता हूं कि ये length हो गई अपनी L by 2 और ये length हो गई अपनी L. Okay, let's say this is L by 2, this is L. Okay, so beta, what I am going to do is I am going to calculate थीटा बी एंड वाई बी डायरेक्टली. मैं थीटा बी और वाई बी डायरेक्टली निकाल लेता हूं फॉर्मूले से. ओके, सो हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट थीटा बी एंड वाई बी? थीटा बी विल बी हाउ मच? थीटा बी विल बी हाउ मच? थीटा बी विल बी हाउ मच? ड्यू टू पॉइंट लोड थीटा बी विल बी W. नाउ बेटा कंसिडर ओनली बीम फ्रॉम B to C. B to C की लेंथ कितनी है? L. तो W L square by 2EI. ओके, and what will be YB? YB will be W L cube by 3EI. Okay, so I have got theta B and YB directly from the formula. Now I need theta A and YA. So how we are going to do that? How we are going to calculate theta A and YA? Now a very important thing. If you draw the elastic curve for this beam, then you will see that from B to C, you are going to get a curve. आपको B से C तक ऐसा एक कर्व मिलेगा, but from A to B, you are going to get a straight line. आपको A से B तक एक straight line मिलेगी. From A to B, you are going to get a straight line. Okay, from B to C, you are going to get a curve. From A to B, you are going to get a straight line. Now why we are getting a straight line from A to B? मुझे A से B तक straight line क्यों मिल रही है? Understand, we are getting a curve here because the beam is bent.
बीम के बेंड होने की वजह से मुझे ये कर्व मिल रहा है, राइट? ये टेढ़ा क्यों हो गया, ये ऐसा कर्व क्यों बन गया? पहले तो बीम सीधी थी, अब ये टेढ़ी क्यों हुई? बिकॉज द बीम बेंट. Why the beam bent? Because there was a bending moment. यहां पे हर सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट था, उसकी वजह से बीम बेंड हुई. बट व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट हियर? अगर मैं यहां एक सेक्शन लूं तो यहां बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? हियर द बेंडिंग मोमेंट विल बी सिंपली जीरो, राइट? बेंडिंग मोमेंट विल बी सिंपली जीरो. तो अगर जीरो बेंडिंग मोमेंट है, इफ द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, देन देयर विल बी नो बेंडिंग इन द बीम. अगर बेंडिंग मोमेंट जीरो है तो बीम में कोई बेंडिंग नहीं होगी. ये नीचे जरूर जा रहा है. क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है ना, एबीसी एक सिंगल बॉडी है, तो ये ऐसा टेढ़ा होगा तो ये भी नीचे जाएगा. नीचे जा रहा है लेकिन वैसे का वैसा स्ट्रेट. देयर इज नो बेंडिंग फ्रॉम ए टू बी. बेंडिंग नहीं हो रही है ए से बी तक, ये सिर्फ नीचे जा रहा है. ओके, नाउ बेटा, इफ फ्रॉम ए टू बी वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, then what does it mean? Straight line means equal slope. Straight line का मतलब क्या होता है? Slope must be equal, right? So beta, from A to B slope is equal. So what does it mean? It means that theta A is going to be equal to theta B, right? Theta A जो होगा वो theta B के बराबर होगा. जो भी A पे slope, B पे slope होगा वही A पे slope होगा. Means theta A I directly got WL square by 2EI. थीटा ए कितना हो जाएगा? थीटा ए यहां से कितना हो जाएगा? WL स्क्वायर बाय 2EI. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट YA ऑल्सो. सो हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट YA? जस्ट लिसन टू मी. YA कैसे निकालेंगे? ओके, सो बेटा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट YA, व्हाट आई वांट यू टू डू इज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, सॉरी, इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं. Okay, draw a straight line from here to here and also draw a straight line from here to here. ठीक है. Now beta, watch this. We have the value of this slope. Okay, what is this? Theta B, right? And we have this deflection also. What is this deflection? This deflection is YB, right? If I calculate this and add in YB, then I will get YA, है ना? This is total YA. ये क्या है? ये total YA है, ये YA है. So in order to calculate YA, I will add YB and this. Okay, अब ये चीज क्या होगी? Let me call it Y. तो मैं Y कैसे निकाल सकता हूं बेटा? tan थीटा बी. tan थीटा बी यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, tan theta b, which will be almost equal to theta b if the deformation is very small. अगर deformation बहुत कम है, then tan theta b will be almost equal to theta b. tan theta b will be equal to almost theta b. So tan theta b, which is almost equal to theta b, will be equal to what? Tan theta b will be almost equal to theta b, will be equal to what? Y divided by L by 2. Y divided by L by 2, right? Y divided by L by 2. तो यहां से what will be Y? Y will be equals to theta into L by 2. Y will be equal to theta into theta b into L by 2. Okay, so what will be YA? अब YA कितना हो जाएगा? YA will be equal to YB plus Y, means YB plus theta b into L by 2. Okay, YB plus theta b into L by 2. Now just put the values here. So what will be YB? What YB कितना है? WL cube by 3EI. What is theta b? WL square by 2EI multiplied by L by 2. Okay, so this is 1 by 3 plus 1 by 4. 1 by 3 plus 1 by 4 कितना होता है? 1 by 3 plus 1 by 4 is 7 by 12. So you have got 7WL cube by 12EI. So this is the deflection at point A, right? This is the deflection at point A. This is the deflection at point A. This is the deflection at point A. So we have got the slope at point A, WL square by 2EI,
and we have got the deflection at point A 7WL cube by 12 EI. So this is how you calculate the slope and deflection at the free end. Now this same thing is applicable in every problem of cantilever beam subjected to any type of load. ठीक है, आपको किसी भी तरीके का लोड दिया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इस टाइप का लोडिंग दिया है, यूडीएल है, फ्री तक नहीं लग रहा है, तब भी दिस इज एप्लीकेबल. आई हैव द फॉर्मूला फॉर दिस, आई कैन कैलकुलेट इट. ओके, देन यूवीएल का क्वेश्चन आया, तब भी इट इज एप्लीकेबल. यूवीएल विच इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम फ्री एंड, तब भी इट इज एप्लीकेबल. ठीक है, अगर मान लो कपल का क्वेश्चन आया, तब भी इट इज एप्लीकेबल. मान लो कपल का ऐसा क्वेश्चन आया, तब भी इट इज एप्लीकेबल, क्योंकि यहां पे भी सेम थिंग, कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हियर, देन डू दैट. अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस. ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, तब क्या करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दैट केस? लेट्स से वी हैव दिस क्वेश्चन, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दैट केस? तो बेटा इस केस में करना क्या है, अंडरस्टैंड, इस केस में करना क्या है? You don't know the formula in this case, you know the formula in this case, है ना? आपको इसका नहीं पता है, आपको इसका पता है. तो मैं क्या करूंगा, what I am going to do is I am going to convert this case into two different cases. ठीक है, मैं इसको दो different cases में convert कर दूंगा. एक केस जब पूरे बीम में यूडीएल लग रहा है, ठीक है, माइनस दूसरा केस जब B से C तक यूडीएल लग रहा है. ओके, व्हेन देयर इज अ यूडीएल फ्रॉम B to C. ओके, सो बेटा आई कांट डायरेक्टली कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन दिस केस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन दिस केस एंड इन दिस केस. इस केस के लिए तो मैं निकाल सकता हूं, राइट? इस केस के लिए तो मैं निकाल सकता हूं. तो यहां पे थीटा ए और वाई ए निकाल लो, यहां पे थीटा ए और वाई ए निकाल लो, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस एंड यू आर गोइंग टू गेट थीटा ए एंड वाई ए इन दिस केस. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. तो मैंने पूरा यूडीएल लगा दिया, फिर बी से सी तक यूडीएल लगा दिया. इसका और इसका मेरे पास फॉर्मूला है, इसका नहीं है. तो इसमें और इसमें अगर मेरे को मिल गया तो इसका भी मिल गया. ओके, सो बेटा वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम आल्सो यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला. हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो बेटा यू कैन सी दैट दिस concept is really important, solving a lot of problems. Okay, let's solve one or two problems based on this. इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम करते हैं. So बेटा GATE 2015 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन. A cantilever beam with flexural rigidity of 200 Newton meter square, EI is 200 Newton meter square, is loaded as shown in figure. The deflection at the tip of the beam is. ठीक है, आपको यहाँ टिप पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है. लेट्स कॉल इट A, B and C. ओके, क्या निकालना है? सॉरी, डिफ्लेक्शन निकालना है. ओके, सो बेटा व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट थीटा बी एंड वाई बी. पहले तो मैं थीटा बी और वाई बी निकाल, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला डायरेक्टली? व्हाट इज द फॉर्मूला? वाई ए विल बी इक्वल टू वाई बी प्लस थीटा बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी, राइट? नाउ व्हाट विल बी वाई बी? WL square by 2EI. What is W? 2000 Newton. अच्छा, sorry, EI is given in kilonewton, sorry, Newton meter square. So I will convert force into Newton and length in meter. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 into L square. Now B से C तक की लेंथ कितनी है? अभी AB को भूल जाओ, YB निकालने के लिए I will consider this length. Okay, so 0.05, so 0.05 L cube, WL cube by 3EI divided by 3EI 200. Okay, WL cube by 3EI. I will get the deflection in meter, I will convert it in mm. Okay, plus theta B. Now what will be theta B? WL square by 2EI. So again W 2000 L 0.05. Okay, remember beta, don't put the total length. Okay, when you are calculating theta B and YB, then you forget this. Okay, you only consider this beam BC. Okay, so WL square length is 0.05 divided by 2EI multiplied by what is the length of AB? 0.05. Okay,
सो आई एम गोइंग टू गेट डिफ्लेक्शन इन मीटर फ्रॉम हियर. यहां से मेरे को मीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा 2000 इंटू 0.05 होल क्यूब बाय 600 प्लस 2000 इंटू 0.05 whole cube by 400. So I am getting 1.01467. 1.01467 into 10 to the power minus 3. 1.04167 into 10 to the power minus 3 meter, or I can write 1.04167. 4167 ये ना, हाँ, mm. So this is my answer. Is this clear? GATE 2015 का question. GATE 2015 का question. Rajan is getting 1.875. Let me check my answer again. 2000 into 0.05 cube by 600. Then 2000 into 0.05 cube by 400. So I am getting this answer 1.04167. Yes, Prasad also got the same answer. Very good beta. Very good. Very good. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. So beta, is this clear? क्या ये चीज क्लियर है? नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर. ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. सो बेटा लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. Assuming EI equal to 10 to the power 4 kilonewton meter square, find maximum deflection of the beam. Again beta, maximum deflection means we need to find deflection at the free end. Okay, cantilever beam में कोई भी लोड लगे, कहीं भी लोड लगे, maximum deflection you will always get at the free end. Okay, whatever the load is, wherever the load is, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमेशा फ्री एंड पे आएगा. क्या कर रहे हो दोस्त तुम लोग? शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाई यू गाइस आर नॉट शेयरिंग? प्लीज शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर द लिंक विद योर ग्रुप्स. आई वांट मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटेंडिंग दीस क्लासेस. आई एम पुटिंग दिस मच एफर्ट. इतना एफर्ट लगा रहा हूं, इतनी सुंदर स्लाइड्स. ये सब डायग्राम मैंने बनाया अपने हाथों से, ठीक है, नॉट अपने हाथों से एग्जैक्टली, बट अपने से खुद से टूल्स यूज करके. तो बेटा इतनी अच्छी सुंदर स्लाइड्स बना रहा हूं, इतने सारे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं. सो प्लीज अप्रिशिएट दिस बाय शेयरिंग द लिंक. प्लीज अप्रिशिएट दिस बाय शेयरिंग द लिंक. ओके, ऑल राइट, ऑल राइट. तो बेटा ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है? ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन बनाते हैं. 4 किलो न्यूटन एट ए एंड 2 किलो न्यूटन एट बी. तो 4 किलो न्यूटन की वजह से तो मेरे को डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मिल जाएगा. ओके, आई विल गेट द डिफ्लेक्शन डायरेक्टली ड्यू टू 4 किलो न्यूटन. तो 4 किलो न्यूटन का डिफ्लेक्शन मैं पहले निकाल लेता हूं. ओके, तो मैं क्या करता हूं, 4 किलो न्यूटन को अलग कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, सॉरी. तो 4 किलो न्यूटन को अलग कंसीडर करके इसकी वजह से डिफ्लेक्शन निकाल लेता हूं. ओके, ए सी, अब बी को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. लेंथ 4 मीटर. तो बेटा इसकी वजह से व्हाट विल बी वाई ए, इसकी वजह से व्हाट विल बी वाई ए. तो 4 किलो न्यूटन की वजह से वाई ए विल बी डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3 ई आई. तो मेरा ये हो जाएगा 4 इंटू लेंथ 4 मीटर बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 4. ओके, मीटर में मिलेगा मेरे को आंसर. आई विल गेट द आंसर इन मीटर. तो 4 टू द पावर 4 by 30, 8.3 into 10 to the power minus 3 meter. Okay, so this is due to 4 kilonewton only. Okay, now I will consider only 2 kilonewton. ठीक है, अब मैं सिर्फ 2 kilonewton को कंसिडर करता हूं. Now I will consider only 2 kilonewton and then I will calculate YA. Okay, so 2 kilonewton is acting where? 2 kilonewton is acting at the center exactly. Okay, sorry. 2 kilonewton is acting at the center. A, B, C, 2 meter, 2 meter. अब इसकी वजह से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो YA will be equal to what? YB plus theta B into AB. ठीक है, तो YB will be equal to what? WL cube by 3EI. WL cube by 3EI. तो ये हो जाएगा 2, W is 2 into. अब बेटा लेंथ विल बी 2 मीटर. ओके, यहाँ पे लेंथ कितनी लेंगे? 2 मीटर लेंगे बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग YB. ओके, तो बेटा लेंथ विल बी 2 मीटर divided by 2 into 10 to the power 4 plus theta B. WL square. This will be 3EI. Sorry.
by 2 into 10 to the power 4 multiplied by AB which is 2 meter. So what will be YA in this case? YA इस केस में कितना आ जाएगा? YA इस केस में कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 into 2 cube 2 into 8 by 330 plus 2 into 8 by 20. 1.33 into 10 to the power minus 3 meter, right? 1.33 into 10 to the power minus 3 meter. So now beta 8.53 and 1.33. So what will be total YA? 8.53 into 10 to the power minus 3 plus 1.33 into 10 to the power minus 3. तो YA कितना आ रहा है? This will be 9.86 into 10 to the power minus 3 meter or 9.86 mm. 9.86 mm. Are you getting this? 9.86 mm. Yes. इतना आ रहा है? इतना आ रहा है? 1.33 आ रहा है ये? 1.33 आ रहा है? 2 into 8 by 30, 2 into 8 by 20. Yes, 1.33. So 8.53 plus 1.33. Okay, so this is how you can solve this problem. So you can see that this concept YA equals to YB plus theta B into AB. This is very useful. है ना? 9.86 meter mm आ रहा है. Yes, Rajan. Yes, Prasad. Yes, Ayush. Yes, Shubham. Very good. Very good. Very good. So you can see how easily we can use this concept. ठीक है? Now बेटा अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स से वी हैव अ कैंटिलीवर बीम इन विच द लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड. ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, ये तो पहले भी लग रहा था, राइट? द लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड, बट in this question, let's say they are not asking you to calculate slope and deflection at A. They are asking you to calculate slope and deflection at another point, let's say C. Let's say this is L by 2, this is L by 2. ठीक है, मान लो center point है C and let's say I want slope and deflection at point C. तो अब क्या? Now what we are going to do? So understand beta, in this case if I want slope and deflection at C, then I don't need to consider the beam from A to C. अगर मुझे स्लीप पे स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना है तो मेरे को A से C तक की बीम कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. Why? Because the bending from A to C is not going to affect the slope and deflection at C. A से C तक बेंडिंग कैसे हो रही है उससे C के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का लेना देना नहीं है. B से C तक बेंडिंग कैसे हो रही है उससे डिसाइड होगा कि C पे स्लोप डिफ्लेक्शन क्या होगा, है ना? A से लेके C तक की बीम कैसे भी बेंड हो, C पे स्लोप डिफ्लेक्शन वही होगा जो BC से आएगा. ठीक है, so I only need to consider the beam from B to C. So what I am going to do is I am going to transfer the load from A to C. मैं A से C तक लोड को ट्रांसफर कर देने वाला हूं. I am going to transfer the load from A to C. ठीक है, तो ध्यान से देखो यहां पे सवाल कैसे बनेगा. ओके, सो आई हैव अ कैंटिलीवर बीम. ठीक है, मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें ए पे लोड लग रहा था, सी पे स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना था. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ओके एक सेकेंड बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कंसिडर ओनली बीम फ्रॉम बी टू सी, नॉट ए टू बी. ठीक है, so this is C, this is B, this is L by 2. Okay, so transfer the load from A to C. So I am going to get a force W and I am going to get a couple WL by 2. ठीक है, मेरे को एक फोर्स मिल गया W और एक कपल मिल गया WL by 2. So now I can easily calculate the slope and deflection at C, right? So theta C will be equal to what? WL by 2 whole square बाय 2EI. तो ये हो जाएगा WL स्क्वायर बाय 8EI एंड YC विल बी WL बाय 2 होल क्यूब बाय 3EI. तो ये हो जाएगा WL क्यूब अपॉन 24EI. ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ आई सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम? I just
आई जस्ट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम ए टू सी, मैंने सीधे ए से सी तक लोड उठा के ट्रांसफर कर दिया और स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लिया सी पे। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं लोड ट्रांसफर कर सकता हूं, इफ आई कैन ट्रांसफर द लोड फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाई आई नेवर ट्रांसलेटेड द लोड फ्रॉम बी टू ए? मैंने ए से यहां तक ट्रांसफर किया, तो यहां से ए तक क्यों ट्रांसफर नहीं कर सकता? तो ये चीज मैं बहुत अच्छी तरह समझा देता हूं। अंडरस्टैंड दिस, ओके, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, व्हाई आई डिड नॉट ट्रांसफर द लोड बैक। मैंने बैक लोड ट्रांसफर क्यों नहीं किया, ये मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूं, ठीक है? तो बेटा अंडरस्टैंड दिस, when the load was acting here, what was the elastic curve? It was like this, है ना? Elastic curve कुछ ऐसा था. Elastic curve was something like this. This is A, this is B, this is C. Okay? तो यहां पे देखो बेटा B से C तक की elastic curve. Okay? Now when I translate the load from A to C, it is not going to change the elastic curve from B to C. मैं जब लोड को ट्रांसलेट करूंगा A से C पे, then I will see that it is not going to change the elastic curve from B to C. Okay, elastic curve remains the same. Okay, but बेटा अब यहां पे देखो क्या होने वाला है. Okay, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट समझो. Now let's say the load is acting at C. अब मान लो लोड जो है वो C पे लग रहा है. Let's say the load is acting at C. Okay, and I translated it back. तो अब देखो बेटा, this point is A, C, B. Okay, so here the elastic curve from B to C will be curve, and A to C it will be a straight line. Elastic curve A से C तक क्या रहेगा? एक straight line, because there is no bending moment here. But if I translate it back, अगर मैं इसको back translate करता हूं, if I translate it back, then I will get an elastic curve like this. तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे मैंने जब इसको ट्रांसलेट किया था, when I translated it up to C, the elastic curve was same. यहां पे भी BC में भी वही इलास्टिक कर्व मिल रहा था, यहां पे भी BC में वही इलास्टिक कर्व मिल रहा था. इट डिड नॉट चेंज. बट यहां पे देखो बेटा, A से C तक पहले इलास्टिक कर्व कैसा था और अब इलास्टिक कर्व कैसा है? पहले इट वाज स्ट्रेट, पहले इलास्टिक कर्व वाज स्ट्रेट, and now the elastic curve is this. Okay, initially it was straight and now it is curved. So elastic curve is changed. Elastic curve changed, which is wrong. Okay, here elastic curve not changed, so this is correct. Okay, so do you understand my concept? क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है कि मैं वापस इसको पीछे ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकता? I can transfer the load forward. मैं फॉरवर्ड ट्रांसफर कर सकता हूं लोड को, बट बैकवर्ड ट्रांसफर नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं, इफ आई डू दिस, then it is going to change the elastic curve, it is going to change my problem, it is going to change the physics of the problem. ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम ही चेंज हो जाएगा. so that's why I can't do this. is it clear? तो बेटा अगर लोड जो है वो यहां लग रहा है और स्लोप डिफ्लेक्शन यहां निकालना है, तो आप ये मेथड लगा दो, और लोड यहां लग रहा है और स्लोप डिफ्लेक्शन यहां निकालना है, तब तो आप ट्रांसफर कर दो. इज इट क्लियर? तो सीधे ट्रांसफर करके यू कैन कैलकुलेट. ओके, so let's solve one problem here. So this is also from GATE 2015. You can see that in GATE 2015 in both sets there was a numerical from deflection of beams. Okay, so a cantilever beam with square cross section of 6 mm side is subjected to a load of 2 kilonewton normal to the top surface as shown in figure. Young's modulus is 210 gigapascal. Magnitude of slope at point Q 20 mm from the fixed end is. तो यहां अपने को स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे. तो बेटा what you are going to do here, very simple, बहुत सिंपल है. मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो मैं ट्रांसफर कर देता हूं लोड को. राइट, I will transfer the load at point Q. And then I will directly use the formula. ठीक है, मैं सीधा फिर फॉर्मूला लगा दूंगा. ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट Q.
this is the load 2 kilonewton, and if I transfer the load I am going to get a moment कितना आएगा बेटा, इसको यहां ट्रांसफर करोगे तो मोमेंट कितना आएगा, 2 into 80, 2 into 80 means 160 kilonewton mm, ठीक है। now what will be the length, अब मेरी लेंथ कितनी रह जाएगी, now the length will be 20 mm, तो अब तो थीटा क्यू डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगा, थीटा क्यू will be equal to WL square by 2EI ड्यू टू 2 किलोन्यूटन, 2 किलोन्यूटन की वजह से WL square by 2EI एंड कपल की वजह से ML by EI, राइट। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो थीटा क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट इज W, 2 किलोन्यूटन, ओके। तो यहां पे हमको W को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2000, लेंथ कितनी 20 mm, चलो इसको mm में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके, इसको mm में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। तो 2 into 10 to the power 3 mm में लेंथ इज 20 mm डिवाइडेड बाय 2EI, E is how much, E कितना दिया हुआ है 210 गीगा पास्कल, ओके। 210 into 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय I कितना हो जाएगा 6 mm, तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो ये हो जाएगा 6 into 6 to the power 4 by 12, ओके, प्लस ml स्क्वायर बाय ml by EI, तो m कितना है 160 किलो न्यूटन mm, so this will become 160 into 10 to the power 3 L20 by EI, तो 210 into 10 to the power 3 into I 6 into 6 क्यूब by 12, सॉरी दिस विल बी क्यूब, ये क्यूब होगा, मैंने यहाँ पे 4 कर दिया है, ओके। सो दिस विल गिव यू थीटा क्यू, दिस विल गिव यू थीटा क्यू, तो EI मैं बाहर निकाल लेता हूं, ओके, आई विल टेक EI आउटसाइड, सो इट इज गोइंग टू बी 1/210 into 10 to the power 3 multiplied by 6 to the power 4 ब्रैकेट में this will become 20 square into 10 to the power 3 प्लस ये कितना बच जाएगा 160 into 10 to the power 3 into 20, एक सेकेंड, so I am getting 0.1587 रेडियन, ऐसा कुछ आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस 0.158 सेकेंड रेडियन, 0.158 सेकेंड रेडियन, 0.1587 क्या हो गया 0.1587, इतना कुछ आ रहा है 0.1587 रेडियन, इज इट क्लियर, तो बेटा आपने यहाँ पे W की वजह से निकाल लिया, M की वजह से अलग निकाल लिया, एंड दोनों की वजह से इन द सेम डायरेक्शन इट विल बी, सो डायरेक्टली ये ऐड हो रहा है, ओके। सो वी आर गोइंग टू गेट दिस स्लोप 0.1587 रेडियन, यस 0.237 क्यों आ रहा है दोस्त, लेट मी चेक इट अगेन, मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, मेरा आंसर हो सकता है गलत हो, सो 160 into 10 to the power 3 into 20 एंड 20 स्क्वायर, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10 to the power 3, ओके, और बाहर आ गया था मेरा 12 ऊपर, 210 into 10 to the power 3 और 6 to the power ये हो गया था 4, तो 0.1587 यस 0.1587 आ गया, ठीक है, चलो, तो ये क्लियर है 0.1587 रेडियन, ओके। ओ सॉरी, यहाँ पे आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे मैंने कपल वाला इक्वेशन नहीं लिया था, यहाँ पे मैंने कपल की वजह से थीटा और वाई नहीं लिखा था, तो कपल की वजह से ये हो जाएगा WL/2 into L/2 by EI, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा WL/2 into L/2 होल स्क्वायर बाय 2EI, so sorry for this, तो there will be slope and deflection due to W and due to couple also, तो couple की वजह से this, okay, and W की वजह से this, okay, so this will be theta and y,
Yes, okay, okay, 0.1587 रेडियन आ रहा है. So this is also the question from GATE 2015. okay, so बेटा आपको ये दोनों सवाल बन जाएंगे आई थिंक, जहां पे लोड जो है बी पे लग रहा है, स्लोप डिफ्लेक्शन ए पे निकालना है, और लोड ए पे लग रहा है एंड स्लोप डिफ्लेक्शन जो है वो बी या सी पे निकालना है. देन इन दैट केस यू कैन जस्ट डायरेक्टली ट्रांसफर द लोड. ओके, सो बेटा इस टाइप के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. ओके, नाउ another very important method, Maxwell's reciprocal method. okay, Maxwell's reciprocal theorem, Maxwell's reciprocal theorem. Now what is Maxwell's reciprocal theorem? Understand. okay, let's say we have a cantilever beam which is subjected to a point load. In one case it is acting at A, ठीक है, this is B, and in one case it is acting at B. okay, now in this case the elastic curve is going to be this. In this case the elastic curve is going to be this. okay, let's say this is the deflection at B, YB, and this is the deflection at A, YA. okay, now understand both the cases. We have the same beam, वही beam है. In one case the load is acting at A and we are calculating deflection at B. In one case we are calculating deflection at A and load is acting at B. A पे load, B पे deflection, B पे load, A पे deflection. Then according to Maxwell's reciprocal theorem, WA into YA, WA into YA equal to WB into YB. WA into YA equal to WB into YB. okay, so this is Maxwell's reciprocal theorem. लोड लग रहा है ए पे, डिफ्लेक्शन निकल रहा है बी पे, लोड लग रहा है बी पे, डिफ्लेक्शन निकल रहा है एक के. तो एक का भी आंसर पता है. इफ यू नो द आंसर इन दिस केस यू कैन कैलकुलेट द आंसर इन दिस केस, और इफ यू नो द आंसर इन दिस केस यू कैन कैलकुलेट द आंसर इन दिस केस. ठीक है, अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. कैसे यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड बेटा. अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन आया, बी पे लोड लग रहा है, ए पे निकालना है. ठीक है, तो एक मेथड में इसका बता चुका हूं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम. अनदर मेथड इज if you can't directly calculate this question then you solve this question. आप लोड को A पे लगाओ और डिफ्लेक्शन निकालो B का. ठीक है, यहां लोड B पे लग रहा है, डिफ्लेक्शन निकालना है A का, ये नहीं बन रहा है, तो आप लोड लगा दो A पे, डिफ्लेक्शन निकाल लो B का, एंड देन यू अप्लाई मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम. ठीक है, A पे लोड लगाओगे तो जितना डिफ्लेक्शन B पे आएगा, B पे लोड लगाने पे उतना ही डिफ्लेक्शन A पे आएगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम. Now there are direct questions also based on this. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट सिविल. अभी मैकेनिकल में मैक्सवेल थ्योरम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, बट बेटा लेट्स सॉल्व दिस आल्सो. इट्स अ वेरी सिंपल मेथड. ओके, फॉर द कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 3 मीटर, a concentrated load of 20 kilonewton applied at the free end causes a vertical displacement of 2 mm at a section located at 1 meter from fixed end. If concentrated load of 10 kilonewton is applied at 1 meter from fixed end, the maximum vertical displacement in the same beam is. मतलब आपको यहां पर लोड दिया है. लेट मी नेम दीज पॉइंट्स. ओके, लेट्स से A, B, C. तो लोड A पे लग रहा है और B का डिफ्लेक्शन पता है. अब आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लोड मान लो B पे लगा रहे हैं, और कितना लोड लगा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग 10 किलो न्यूटन. ओके, लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन B पे. नाउ कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. नाउ कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट A, YA. ठीक है, A पे लोड लग रहा था, B पे डिफ्लेक्शन निकाल लिया. अब B पे लोड लग रहा है, A पे डिफ्लेक्शन निकालना है. वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू यूज मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम. WA into YA equals to WB into YB. ओके, तो A पे लोड लग रहा है कितना, 20 किलो न्यूटन. ओके, एंड A का डिफ्लेक्शन हमको निकालना है YA. B पे लोड लग रहा है कितना, 10 किलो न्यूटन, और B का डिफ्लेक्शन कितना है, 2 mm. So from here YA will be equal to what, 20 cancel, this will be 1 mm, this will be 1 mm. Is it clear? Is it clear?
तो बेटा ए पे लोड लग रहा था, बी का डिफ्लेक्शन दिया था, ए पे लोड लग रहा था 20, बी पे डिफ्लेक्शन 2, अब बी पे लोड लग रहा है, ए का डिफ्लेक्शन निकालना है, तो बी पे लोड लग रहा है 10, ए का डिफ्लेक्शन विल बी 1 mm. इट इज डायरेक्टली फ्रॉम मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। अब इसी क्वेश्चन को अगर नॉर्मल मेथड से बनाना होता तो कितना डिफिकल्ट जाता, राइट? तो यहां पे मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम से इट इज सॉल्व्ड इन वन सिंगल स्टेप, एक स्टेप में आंसर। ओके, सो दिस इज मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। इट इज आल्सो एप्लीकेबल इन सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम में भी एप्लीकेबल है। सिंपली सपोर्टेड बीम में भी ए पे लोड लग रहा है, बी का डिफ्लेक्शन, बी पे लोड लग रहा है, ए का डिफ्लेक्शन। नॉट एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप। ठीक है, स्लोप के लिए नहीं है, सिर्फ डिफ्लेक्शन के लिए। ओके, नॉट एप्लीकेबल इन स्लोप। डायरेक्ट अगर आपको सिर्फ पॉइंट लोड दिया है और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, then you can apply this. Okay, all right, now we have solved a lot of problems. Now this is another very regular problem. ये भी बहुत frequently पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। Okay, you can see this question in a lot of exams asked repeatedly. बहुत सारे एग्जाम में repeatedly इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इस exactly इस क्वेश्चन को नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को। Let's understand this problem. Okay, consider the beam AB shown in figure below. Part AC of the beam is rigid while part CB has flexural rigidity EI. ठीक है, AC जो है वो rigid है और CB की rigidity EI है। maximum deflection calculate करना है। Okay, so where you are going to get the maximum deflection? You are going to get the maximum deflection at A. So you need to basically calculate YA. Okay, अब यहां पे ध्यान से समझो बेटा, what do we mean by रिजिड बीम? रिजिड बीम होने का मतलब क्या है? रिजिड बीम होने का मतलब है इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इंफिनिटी है। द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज इंफिनिटी। सो बेटा व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट इफ इट इज अ रिजिड मटेरियल देन फ्रॉम ए टू सी द बीम इज नॉट गोइंग टू बेंड। यहां ए से सी तक बीम बेंड नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज इट इज अ रिजिड बीम। ओके, ए से सी तक की बीम रिजिड है। This part is rigid. So if it is rigid, अगर ये rigid है, if it is rigid, that means this part is not going to bend. So if I draw the elastic curve, then बेटा B से C तक तो ये bend होगा, B से C तक तो ये bend होगा, but A से C तक, from A to C, it is going to be linear. ये straight रहेगा, linear रहेगा. It is not going to bend from A to C. Why it is not going to bend from A to C? Because बेटा it is a rigid material. It is not going to bend. आप कितना ही यहाँ लोड लगा लो, whatever load you apply here, it is not going to bend. अब बेटा सवाल ये उठता है कि if it is not going to bend from A to C, if the elastic curve from A to C is straight, that means I don't need to consider the load between AC. I can directly transfer the load from A to C. I told you already when we can transfer the load. हम कब ट्रांसफर कर सकते हैं? जब इलास्टिक कर्व चेंज ना हो रहा हो, when you are not changing the elastic curve. So right now elastic curve is straight. Right now elastic curve is straight. Even though I change the load, अगर मैं लोड को चेंज भी कर देता हूं, अगर मैं लोड को चेंज भी कर देता हूं, I am not going to disturb the elastic curve. So what I am going to do is I am going to transfer the load from A to C. ठीक है, मैं C पे लोड को उठा के ट्रांसफर कर देता हूं। सो दिस विल बी W, दिस मोमेंट विल बी WL, ओके, लेंथ इज L. ओके, सो नाउ बेटा अगेन यू आर गोइंग टू गेट द सेम इलास्टिक कर्व। यहां पे भी आपको वही इलास्टिक कर्व मिलेगा A से C तक, स्टिल द बीम इज गोइंग टू रिमेन स्ट्रेट। ओके, तो इलास्टिक कर्व नॉट चेंज्ड, सो आई हैव नॉट चेंज्ड द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ in this case can I calculate YA directly? अब आप सोच रहे होंगे ये करने की क्या जरूरत थी, डायरेक्टली YA का फॉर्मूला लगा देना था ना। तो बेटा यहां फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज नॉट कांस्टेंट। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कांस्टेंट होगी तभी फॉर्मूला वैलिड है, इसीलिए मेरे को ये करना पड़ रहा है। ये मत सोचो कि सॉरी ये सब करने का क्या जरूरत है, डायरेक्टली यहां YA का फॉर्मूला लगा। नहीं, यू कांट डू दैट। व्हाई? बिकॉज रिजिडिटी इज नॉट कांस्टेंट. Rigid EI, infinity EI. So beta you can't apply direct formula here, but you can apply direct formula here because here I have the formula for YC and theta C, and then I can calculate YA using this. अब यहां मैं ऐसा कर सकता हूं, YA equals to YC plus theta C into AC.
अब बेटा सबसे पहले वाई सी और थीटा सी निकाल लेते हैं, ठीक है, वाई सी और थीटा सी निकाल लेते हैं। तो वाई सी यू विल गेट बिटवीन ड्यू टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एल, थीटा सी यू विल गेट ड्यू टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एल, ठीक है। तो थीटा सी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू की वजह से कितना हो जाएगा, इट विल बी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2ei, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2ei, एंड डब्ल्यू एल की वजह से एम एल स्क्वायर बाय डब्ल्यू एल क्यूब बाय डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 3i, एंड m की वजह से कितना होता है एम एल बाय ई आई। तो डब्ल्यू एल इज एम एल बाय ई आई, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2, डब्ल्यू एल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2ei, ठीक है। देन वाई सी ड्यू टू डब्ल्यू, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3ei, ड्यू टू m एम एल स्क्वायर बाय 2ei, तो ये 1/3 प्लस 1/2 5/6, 5 डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6ei, ठीक है। नाउ वाई ए इज वाई सी 5 डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6ei प्लस थीटा सी 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2ei इंटू ए सी विच इज एल। तो 5/6 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 5/6 प्लस 9/6, 14/6 means 7/3. So YA will be equals to 7WL cube by 3EI, right? 7WL cube by 3EI. Is this correct? Is this correct? Is this correct? Yes, yes, yes. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो बेटा ये रिजिड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ओके। You will see these type of questions a lot in exam, okay. So beta, whenever there is a rigid beam, you can directly transfer the load from this point to this point, solve the entire question by direct formula, ठीक है। You can solve this question from moment area also and strain energy method also, strain energy से भी और moment area से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। If you want, you can solve this problem using strain energy और moment area, okay. Yes. Now बेटा we have solved this problem. अब आते हैं एक बहुत important topic पे. Let's move on to the very important topic and that is the deflection due to impact. अब ये भी एक बहुत ही interesting question है. This is also a very interesting question. A rectangular beam of width 200 mm and thickness 300 mm is simply supported at the ends. A load of 50 kilonewton is dropped on the center of the beam. So now बेटा understand, this beam is subjected to an impact load, ठीक है। ये एक impact load है। We have already seen axial impact load. हमने axial impact load already देखा हुआ है axial load वाले चैप्टर में, right? We have already seen problems related to axial impact load. This is a problem related to transverse impact load, okay? यहाँ beam पे load लग रहा है impact load, okay? So बेटा we have a load which is dropped from 20 mm and we need to calculate maximum deflection in the beam. So बेटा let's consider this point A, B, C. तो C पे we need to calculate the deflection. We need to find YC. Okay. अब understand. Here the loading is impact. यहाँ impact loading हो रही है, ठीक है। अब इस केस में आपको निकालना है deflection. How we are going to calculate deflection here? Very easy. We are going to use the impact factor. अब इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला याद है आपको? इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था। इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला, इम्पैक्ट फैक्टर, दोज ऑफ यू हु हैव बीन रेगुलरली रिवाइजिंग, उनको ये याद होगा। हु रिवाइज एवरी डे, दे मस्ट रिमेंबर दिस 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h upon delta L static, right? Now this was the impact factor in case of axial load where the deformation was change in length. अब यहाँ पे deformation change in length नहीं है, यहाँ पे deformation क्या है? Deflection है, तो यहाँ change in length नहीं आएगा, यहाँ instead of change in length it will be deflection, ठीक है। तो अब यहाँ impact factor निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? First you need to calculate y static. What is y static? अब ये y static क्या है? This is deflection due to gradually applied load. अगर लोड ग्रेजुअली अप्लाइड हो
तो डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो यूजुअली वॉट एवर लोड वी कंसिडर दैट इज अ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। यूजुअली वॉट एवर लोड यू कंसिडर दैट इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ओके। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में आई ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, मेरे को ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, ओके। सो वाई स्टैटिक एट पॉइंट सी कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। क्या फॉर्मूला है? सिंपली सपोर्टेड बीम सेंटर पे लोड, फॉर्मूला कितना है? सिंपली सपोर्टेड बीम सेंटर पे लोड WL³ बाय 48 EI, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। लेट मी एक बार मैं थोड़ा कंफर्म कर लेता हूं क्योंकि मेरे को खुद को कभी कभी फॉर्मूला याद नहीं रहते। W कहां गया? L³ बाय 48 EI, यस आई रिमेंबर द करेक्ट फॉर्मूला, यस WL³ बाय 48 EI, WL³ बाय 48 EI, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए आज। सो नाउ बेटा व्हाट इज W? 50 kilonewton. So if it is gradually applied, if this 50 kilonewton is not dropped, if it is gradually applied, length is how much? 4 meter, ठीक है, divided by 48 EI, so 2 into 10 to the power 5 9 Newton per mm square। इसको फिर मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। WL³ divided by 48 2 into 10 to the power 5 Newton, ओ सॉरी E दिया हुआ है 2 into 10 to the power 5, I निकालना पड़ेगा। व्हाट इज I? 200 mm विड्थ, 300 mm थिकनेस, तो 200 mm into 300 cube by 12। oh my god, very lengthy calculation, okay। so let's calculate it। 50 into 10 to the power 3 into 4000 whole cube multiplied by 12 divided by 48 into 2 to the 10 to the power 5, 200 into 300 का cube, so what is it? 0.74074, 0.74 mm ले लेता हूं मैं, ठीक है। let me take it 0.74 mm, sorry, color coding, final answer should be in red, that is a color coding I have been using। तो बेटा y स्टैटिक निकल गया। नाउ आई कैन कैलकुलेट द इंपैक्ट फैक्टर। अब मैं इंपैक्ट फैक्टर निकाल सकता हूं। नाउ आई कैन कैलकुलेट द इंपैक्ट फैक्टर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h। व्हाट इज h? हाइट ऑफ ड्रॉप इज 20 mm, 20 divided by what is y? 0.74। so do you understand what is this? In case of axial impact load, this is change in length, and in case of beam transverse impact load, we have this deflection, okay। so deflection, static deflection I calculated from formula and I have put it here। so impact factor I am getting how much? 1 plus root over 1 plus 2 into 20 40 by 0.74, so I am getting 8.42 mm, 8.42, this is a impact factor। so now what will be YC? due to impact load it will be equal to YC static multiplied by 8.42, okay। तो ये हो गया 0.74 multiplied by 8.42, okay। so what will be YC? 8.42 into 0.74, it is 6.23 mm, 6.23 mm, yes, is it correct? 6.23 mm, yes, 6.23 mm, yes, 6.23 mm, right। so beta this is the deflection due to impact loading, ठीक है। तो बेटा impact loading का question आया, so what you can do is use this formula to calculate the static deflection, then put it here and calculate impact factor, and then multiply impact factor with static deflection, is it clear? same thing you can do to calculate stress also। अगर bending stress निकालना है तब भी क्या कर सकते हो? calculate deflection, calculate impact factor, and then multiply impact factor with stress due to static loading। static loading से stress तो निकल जाएगा my by I, okay। वहां से static load का stress निकाल के multiply impact factor। is it clear? very good Prasad, very good Shubham, very good Rajan, very good Ayush, very good Ashwin, very good
ओके तो बेटा दिस इज डिफ्लेक्शन ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग. ओके, इंपैक्ट लोडिंग का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है. सो वी हैव सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम आल्सो. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. तो नेक्स्ट is a very interesting topic, and I have told you in the beginning of beams there are two categories of beam: statically determinate beams, statically indeterminate beams. What do we mean by statically indeterminate beams? Statically indeterminate beams कौन सी होती हैं? Statically indeterminate beams means where you cannot calculate reactions directly from equilibrium equation. Equilibrium equation लगा के, सिर्फ equilibrium equation लगा के आप reactions calculate नहीं कर सकते. Why? Because the number of reactions, number of unknowns are greater than number of equilibrium equation. ठीक है? For example, we have this beam. Okay, a propped cantilever beam. Propped cantilever means cantilever beam with an additional support. Okay, तो यहाँ पे there are three reactions already at the fixed end. Force in X, force in Y, couple. Three reactions already. There is an additional reaction here. 4 reaction. Now 4 reaction and we have only 3 equilibrium equations. Summation of fx equals to 0, summation of fy equal to 0, summation of m equal to 0. 4 reactions, 3 equilibrium equations. We can't calculate reactions just by equilibrium equation. So this is a statically indeterminate beam. So now in this topic we are going to solve a lot of statically indeterminate problems. ठीक है, मैं बहुत सारे अलग अलग statically indeterminate problems लेके आया हूं आप लोगों के लिए. Very interesting. So let's solve each one of them. And this is a very important topic. Why? Because there was a question from this topic in GATE 2019. GATE 2019 में एक question इसके ऊपर already आ चुका है. बेटा hit the like button right now. Why the likes are not 100 till now? अभी भी 100 नहीं पहुंचा है, तो बेटा प्लीज हिट द लाइक बटन एवरीवन एंड शेयर एंड शेयर. ओके, दिस इज अ रिक्वेस्ट. ओके, शेयर द लिंक. नाउ बेटा वी नीड टू कैलकुलेट द रिएक्शन एट ए एंड ओनली. आपको पूरे रिएक्शन नहीं निकालने, बस ये एडिशनल रिएक्शन निकालना है. क्यों सिर्फ यही रिएक्शन क्यों निकालने बोल रहे हैं, यहां के रिएक्शन क्यों नहीं निकालना है? अंडरस्टैंड बेटा, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हियर, देन आई कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम दिस साइड और आई कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम दिस साइड. तो किसी एक तरफ के रिएक्शन भी पता है तो काम चल जाएगा. तो दोनों तरफ के रिएक्शन निकालने की जरूरत है क्या? नो नीड, राइट? सो बेटा दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू कैलकुलेट ऑल द रिएक्शन. आई ओनली नीड एनी वन एंड रिएक्शन. तो यहां के रिएक्शन निकालना मुश्किल होगा ना, यहां का निकाल लेते हैं, ज्यादा आसानी से निकल जाएगा. सो बेटा व्हाट आई वांट यू टू डू इज रिमूव दिस रोलर सपोर्ट एंड अप्लाई द रिएक्शन हियर. ठीक है, बस रोलर सपोर्ट को हटा दो, सिर्फ उस रोलर सपोर्ट को हटा दो और रिएक्शन लगा दो. ठीक है, इस वाले सपोर्ट को हटाने की जरूरत नहीं है. कीप दिस सपोर्ट बट रिमूव द रोलर सपोर्ट. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट? एंड देयर इज अ यूडीएल ऑलरेडी. यूडीएल ऑलरेडी लग रहा है इसके ऊपर W का. And now I have removed a roller support. So due to the roller support there will be a point reaction RA. अब ये मत बोलना सर डाउनवर्ड भी तो लग सकता है. तो बेटा लगा दो लगाने के लिए. ठीक है, योर आंसर विल बी नेगेटिव, बट बेटा यहाँ लॉजिकली देखो ना यार, रिएक्शन अपवर्ड ही तो आएगा ना. बीम जो है वो रोलर के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, तो रोलर बीम के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगा ऑब्वियसली, राइट? नाउ बेटा व्हाट यू नीड टू डू हियर, I can't apply equilibrium equation. आप ये सोच रहे हो कि B पे मोमेंट लेके निकाल लोगे, तो बेटा B पे there is a couple that is also unknown. So if you take moment at B, you will get a couple as well as RA, two unknowns. You can't solve that equation. ठीक है? So now in order to calculate RA, I am going to use compatibility equation. Remember compatibility equation. In case of axial load, we have solved problems of statically indeterminate nature, right? Statically indeterminate problem में क्या करते हैं? Compatibility equation means what? Why does the beam become statically indeterminate? We have already discussed this in axial loading. Why does a system become statically indeterminate? Statically indeterminate क्यों बनती है body? क्योंकि आप किसी ना किसी तरीके से body के deformation को constrain कर रहे हो. You are constraining the deformation of the body in somehow. Okay, so how we constrain the deformation in this case? We provided a roller support at A, so the deflection at A became 0. There is no deflection at A, that is your constraint.
तो उसी की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. ओके, सो व्हाट विल बी योर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हियर, YA विल बी 0. अब बेटा YA जो है वो W की वजह से भी आ रहा है, RA की वजह से भी आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैन आई राइट इट YA ड्यू टू W प्लस YA ड्यू टू RA इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस. ओके, W की वजह से YA विल बी डाउनवर्ड and RA की वजह से YA will be upward. Okay, so beta one is downward, one is upward. So if you are considering this to be positive, this will become negative. If you are considering this to be negative, this one will become positive. किसको positive किसको negative, that is not important. Okay, किसी भी एक को positive रख दो, दूसरा negative बन जाएगा. मैं इसको positive ले लेता हूं because usually all the deformations are downward. So let me consider this positive. कोई बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना. तो बेटा now what will be the equation due to UDL? What will be YA? Due to UDL, what will be YA? WL to the power 4 by 8 EI. And due to RA, RA is point load. Negative हो जाएगा WL cube. Sorry, W क्या लिख रहा हूँ? It will be RA L cube by 3 EI equal to 0. So from here, I am going to get RA equals to 3WL by 8. I am going to get RA equals to 3WL by 8. Yes, yes, very good, very good. So beta, this is the reaction at point A. Is this clear? Is this clear? We have a propped cantilever beam. Okay, अब बेटा इसी तरीके से आप ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो. You can solve this problem also. आप ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो. Let's say you have a simply supported beam. Let's say you have a simply supported beam subjected to UDL, and now there is an additional roller support at the center. Okay, तो आप यहां पे RB निकाल सकते हो. कैसे RB निकालेंगे बेटा? How we can calculate RB? Simple. You can remove the support at B. Okay, don't remove support at A and C. Keep it like that. आपको वो करने की जरूरत नहीं है. Just remove the support at B. So I am going to get this RB, right? I am going to get this RB. So now beta, what will be the compatibility equation here? YB will be equal to 0, right? Here compatibility equation will be YB equal to 0. Now what will be YB due to UDL? UDL की वजह से YB कितना हो जाएगा? It will be 5WL to the power 4 by 384 EI, and it will be downward. RB की वजह से it will be upward, minus RB into L cube by 48 EI. Simply supported beam due to UDL, simply supported beam due to central load. Okay, now what will be RB? अब यहां पे अगर आप कैलकुलेट करोगे RB, you are going to get 5WL by 8. So this is the reaction in continuous beam. This is a continuous beam, and this is the reaction in propped cantilever beam. Is this clear to everyone? Yes, very good, very good, very good. So beta, this is statically indeterminate beam. Now this is only one type of problem. Okay, there are several other types of problem. I am going to explain every one of them. Okay, so beta, ये वाला clear है, roller support. Next question. Now this is a question which was there. This type of question was there in GATE 2020. ये GATE 2020 में आ चुका है और उससे पहले भी आ चुका है. Okay, so this is an important type of question. For the beam shown in figure, find the force developed in the spring. Spring में कितना force आ रहा है वो निकालना है. Assume flexural rigidity of the beam EI and stiffness of the beam 3 EI by L cube. Okay, now let's solve this problem. अब इसको solve करते हैं. Okay, so what will be this square? How this question will be solved? Understand. This question will be solved using the same process. हम वही process use करने वाले हैं जो हमने इससे पहले use किया है. Okay, here due to this spring there will be a force on the beam at this point A. Okay, what I want you to do is
सेपरेट द बीम विद द स्प्रिंग। आप बीम और स्प्रिंग को सेपरेट करके डायग्राम ड्रॉ करो। सेपरेट द बीम एंड द स्प्रिंग। ओके, सो दिस इज द बीम and this is the spring. Okay, all right, sorry. Now there was a point load W here acting on the beam. This is A, this is B. Okay, now there will be a force developed between the spring and the beam. यहां पे बीम और स्प्रिंग के बीच में एक फोर्स आएगा, ए पॉइंट पे एक फोर्स आएगा. लेट मी कॉल दिस फोर्स आर ए. Okay, so now you can see there is a force between the spring and the beam, and we need to calculate this force. Okay, they are asking us to calculate force developed in the spring, means Ra. Okay, the force between the beam and the spring force. Okay, now understand how we are going to solve. Same process, compatibility equation. Compatibility equation banao. What will be the compatibility equation here? अब यहाँ पे compatibility equation is not going to be ya equal to 0. No, ये नहीं होगा. Ya will not be equal to 0. Why? Because there is not a rigid support here. पिछले केस में there was a rigid roller, so there was no deformation at A. But right now there is a flexible spring. So if you apply a load, there will be a deflection at A, but there will be a constraint. क्या constraint होगा? If A deflects by 1 mm, then spring will be compressed by 1 mm, है ना? जितनी spring compress होगी उतना ही A deflect हो सकता है. Okay, so here what is the constraint? The constraint is Ya will be equal to Y of spring, है ना? जितना spring compress होगा उतना A नीचे जाएगा, right? That is your constraint. Okay, the compression in spring will be equal to deflection at point A. Now what will be Ya? There is force W downward, Ra W upward. Okay, so beta Ya due to W plus Ya due to Ra equal to Y of spring. Now what I want you to do is, instead of getting confused which one will be positive, which one will be negative, what I suggest is you write down the directions here. यहाँ पे directions mention कर लो. तो W की वजह से Y क्या होगा? डाउनवर्ड. Ra की वजह से Y अपवर्ड. स्प्रिंग का Y डाउनवर्ड. राइट? नाउ डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड. So if I consider this positive, this will be negative, this will be positive. Very easy, no confusion, no doubt. Okay, this is just to avoid doubt. Okay, so Ya due to W will be equal to what? WL cube by 3EI. Ya due to Ra minus RaL cube by 3EI. And Y due to spring will be equal to what? Sorry, ये plus नहीं होगा. Ra. Y due to spring will be equal to what? Ra divided by stiffness. Ra divided by stiffness, right? And what will be stiffness? Stiffness is 3EI by L cube. So can I write it WL cube by 3EI equals to, this will become RaL cube by 3EI plus this will be RaL cube by 3EI. So 3EI, 3EI, 3EI cancel, L cube, L cube, L cube cancel. This will become W equals to 2RA. So RA equals to W by 2. RA equals to W by 2. RA equals to W by 2. So this is the force developed in the spring. This is the force developed in the spring. Half of W. W by 2. Is this clear? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अब अगर आपको मैं ये वाला क्वेश्चन दूं, इफ आई गिव यू दिस क्वेश्चन, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दूं, इफ आई गिव यू अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एंड देन देयर इज अ स्प्रिंग, then also you can calculate
स्प्रिंग फोर्स, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, यहाँ पे भी स्प्रिंग फोर्स निकाल लोगे। सेम प्रोसेस, y at the center of the beam will be equal to y of spring, ठीक है। तो वही कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाओ, सॉल्व करो, you will get the answer. Is it clear? So beta, this spring wala question has been repeated multiple times in GATE only. In fact, in GATE 2020 there was a question from this. Okay, so very important question in every exam. This is an important question. Okay, so let's move on to the next type of statically indeterminate problem. Okay, अब ये next problem जो है, this is very interesting. Okay, we have two cantilever beams connected by a roller. This is a rigid roller. ठीक है, ये क्या है? This is a rigid roller. Okay, so we have two cantilever beams subjected to UDL and they are connected by a rigid roller. Okay, ये वाला UDL भी सेम ही लग रहा है, ठीक है, दिया नहीं है मतलब सेम ही होगा. Okay, so this is W, this is also W. So we have to find the reaction force at B. Okay, which will be same as reaction force at C. Simple सी बात है. Okay, so now beta, in this problem what you need to do, very easy, बहुत आसान है, ठीक है. What you need to do is, if you want to find reaction here, then separate the two beams from this roller. अब ये roller हटाओ और दोनों beams को separate करो. Okay, so I have this cantilever beam subjected to UDL W. This is A, this is B, ठीक है. Then I have another cantilever beam subjected to UDL, same UDL W. This is C, this is D. Okay, now I have separated them from a roller. मैंने दोनों को एक रोलर से सेपरेट किया है. तो अगर मैं रोलर हटाऊंगा, then what reaction am I going to get? What reaction am I going to get? I am going to get a point force RB, है ना. अब ये मत बोलना बेटा RB ऐसा ही क्यों, यहां डाउनवर्ड और यहां अपवर्ड भी तो हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, you don't need to worry about the direction. You can assume any direction. Your answer will be positive or negative according to your assumption. If your assumption is right, your answer will be positive. If your assumption is wrong, your answer will be negative. But second of all, you can apply the logic na. This beam is going to apply downward force on this beam, and in reaction, this force, in return, this beam will apply an upward force on this beam. तो ये आप logically निकाल सकते हो, but logic नहीं लगा पा रहे हो तो कुछ भी डायरेक्शन ले लो, but make sure that the direction and magnitude are equal and opposite. Magnitude and direction of reaction at B and C will be equal and opposite. Okay, तो यहाँ upward है तो यहाँ downward होगा, यहाँ RB है तो यहाँ भी RB होगा. Okay, now beta, in order to calculate RB, again we need compatibility equation. Compatibility equation. So what is the compatibility equation here? यहाँ पे compatibility equation क्या होगी? Understand बेटा, both these beams are connected by a roller, rigid roller, which is not going to compress. ये roller तो compress नहीं होगा. तो अगर ये beams नीचे गई तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये भी नीचे जाएगा. It will be something like this. It will be something like this, है ना. It will be something like this. So you can see that the deflection in B and C will be equal. जितना B नीचे जाएगा C भी उतना ही नीचे जाएगा. तो बेटा I can write YB equal to IC. YB equal to IC. So now beta, what will be YB? In case of this beam we have a UDL and RB. Okay, तो अब बेटा UDL से downward deflection आएगा, है ना. तो this will become W into 4 to the power 4 by ATI. Okay, RB से upward, so minus RB into 4 cube by 3EI. Okay, this is the deflection at point B. W downward, RB की वजह से upward. Now here RB and W both are downward, है ना. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? This will become W into 2 cube, 2 to the power 4 by ATI plus RB into 2 cube by
3ei, राइट? दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं, सो बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है? सो नाउ वी हैव दिस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. अब 4 क्यूब तो नहीं है, ei कैंसल, तो आई विल गेट w4 to the power 4 by 8 minus w2 to the power 4 by 8 इक्वल टू rb को ले लेते हैं इधर, तो rb 2 क्यूब by 3 प्लस rb 4 क्यूब by 3, ठीक है? तो ये कितना आ रहा है? दिस विल बिकम w इंटू 4 to the power 4 minus 2 to the power 4. 240 by 8, 30w. This will become 30w equal to 2 cube by 3 plus 4 cube by 3. 8 by 3 plus 64 by 3. 24. This will become 24 RB. So what will be RB? RB equals to 30 by 24. तो 30 by 24 मतलब कितना? 15 by 12. RB equals to 15W by 12. RB equals to 15W by 12. RB equals to 15W by 12. Is it clear? 15W by 12 आ रहा है? 45W by 16. Oh sorry. एक तो यार यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने. L के टर्म्स में क्यों आएगा? लेंथ के टर्म्स में क्यों आएगा? यहाँ पे तो लेंथ दी हुई है ना. सॉरी, लेंथ के टर्म्स में नहीं आएगा. 15W by 12 इतना आ रहा है क्या? 15W by 12 45W by 8 कैसे आ जा रहा है यार? Have I done something wrong? 8 by 3 plus 64 by 3. Have I done something wrong? Have I done something wrong? क्या मेरा सॉल्यूशन गलत है? क्या मेरा सॉल्यूशन गलत है? Let me check it once. Let me check it once. 4 to the power 4 minus 2 to the power 4 by 8 30. फिर 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब by 3 24. तो 30 डिवाइडेड बाय 24 5 by 4 सॉरी. हाँ तो ये तो और कैंसल होगा ना. This will be 5 by 4. 5W by 4. Yes. 5W by 4. Yes. 5W by 4. 5W by 4. Yes. So RB will be equal to 5W by 4. Is this clear? W की वैल्यू भी दे देता तो W रखते खत्म करते, है ना? तो बेटा 5W by 4. So this is clear. In this case, what will be the compatibility equation? Deflection at point B will be equal to deflection at point C because both are connected by a rigid roller. Yes? Yes. Thank you so much guys. Thank you so much for correcting. Okay. Now next question. Another interesting question. This is also statically indeterminate. What is the deflection at the hinge for the beam shown below? Okay. अब यहाँ पे अच्छा, there is one very interesting thing that I want you to understand. Okay. ये बहुत important topic है. इस केस में you can see that deflection at B and C is equal, है ना? Deflection at B and C is equal, but बेटा यहां पे एक चीज ध्यान देना. Okay, YB is always equal to YC, but theta B may or may not be equal to थीटा सी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. बिकॉज यहां पे यू कैन सी दैट द इलास्टिक कर्व फ्रॉम ए टू सी इज डिफरेंट एंड इलास्टिक कर्व फ्रॉम डी टू सी इज डिफरेंट. तो यहां सी पे एसी में स्लोप अलग हो सकता है और सीडी में स्लोप अलग हो सकता है. ठीक है, एसी में स्लोप कैन बी डिफरेंट एंड सीडी में सी पे स्लोप कैन बी डिफरेंट. तो स्लोप्स कैन बी डिफरेंट बट डिफ्लेक्शन विल बी सेम. ओके, स्लोप्स कैन बी इक्वल, स्लोप्स इक्वल हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते हैं, बट डायरेक्शन में दे विल ऑलवेज बी अपोजिट, है ना? डायरेक्शन में एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना? जैसे यहां पे देखो बेटा, दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज व्हाट क्लॉकवाइज. सो बेटा स्लोप विल मे और मे नॉट बी इक्वल. स्लोप का कैसा बन रहा है देखो, यहां पे स्लोप कैसा बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है और दूसरा ऐसा बन रहा है. ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो
कि if I draw a tangent here, then I will get a different tangent, and if I draw a tangent here, sorry, if I draw a tangent here, then I will get a different tangent. Okay, तो दोनों के टेंजेंट देख रहे हो आप अलग अलग बन रहे हैं, दोनों के टेंजेंट देख रहे हो अलग अलग बन रहे हैं. दिस इज एक थीटा, थीटा सी, ठीक है, एंड दिस इज थीटा डी. ओके, सो यू कैन सी दैट थीटा सी एंड थीटा डी आर डिफरेंट इन दिस केस. ओके, तो वो इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, डायरेक्शन में दे विल ऑलवेज बी अपोजिट. इज इट क्लियर? डिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल, बट थीटा मे और मे नॉट बी इक्वल. इट विल डिपेंड. दैट यू नीड टू कैलकुलेट. आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो. यू कैन कैलकुलेट एंड चेक whether they are equal or not. Is it clear? Is it clear? Very good beta, very good. Okay, now beta let's solve this. अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे है. We have two beams connected together by a hinge. अब hinge पे connected है बेटा. अब यहाँ पे ध्यान दो. Again, in order to solve the problem, I will separate the two cantilever beams. Okay. Okay, so this is A, B, B, C. Okay, तो यहां पे ध्यान दो बेटा, बहुत 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 एक जरूरी पॉइंट. ओके, हियर व्हाट विल बी द डिफरेंस इन दिस बीम एंड दिस बीम? एक तो पहली बात तो ये बेटा, P फोर्स विल ईदर बी एक्टिंग हियर और हियर. दोनों में मत लगा देना, ऐसा मत कर देना, ठीक है बेटा. यहां पे जब दोनों को जोड़ोगे तो टोटल फोर्स कितना आना चाहिए? बी पे P आना चाहिए ना. टोटल फोर्स मस्ट बी P. सो बेटा इफ यू आर अप्लाइंग P हियर, देन यू कांट डू दिस. ओके, या तो P इधर लगा लो या तो P इधर लगा लो, आपकी मर्जी है. ओके, इट्स अप टू यू, बट अप्लाई P इन एनी वन केस. ओके, इफ यू अप्लाई P in both cases, then it will become 2P. Okay, when you combine them. Now understand beta, what is the difference in this case and this case? Here there was a roller, and due to roller there is only one vertical reaction, and here there is a pin, a hinge. So due to hinge there will be a horizontal reaction and a vertical reaction. ठीक है, क्या आएगा? एक vertical reaction भी आएगा और एक horizontal reaction भी आएगा. ठीक है, इसको मैं ऐसा लगा लेता हूं. But beta understand, in order to calculate the deflection, do I need to consider the horizontal force? Horizontal force से कोई vertical deflection आएगा क्या? नहीं. Horizontal force से कोई vertical reaction आएगा क्या? नहीं. So बेटा you don't need to consider these horizontal reactions. ठीक है, आपको ये horizontal reaction लेने की जरूरत नहीं है. Just consider the vertical one. Okay, just consider the vertical one. तो बेटा this will be RB, this will also be RB. Okay, now what will be the compatibility equation here? Now understand beta, in order to calculate deflection at B, they are asking you to calculate deflection at hinge, means they are asking you to calculate YB. So in order to calculate YB, I need RB. So in order to calculate RB, what I can do? I can apply the compatibility equation. And what will be the compatibility equation here? YB. B पे जो deflection AB में आएगा, वही deflection BC में भी आएगा ना. Here it will be like this. Same thing. Deflection will remain same. Slope may or may not be equal. है ना? Slope equal भी हो सकता है, different भी हो सकता है, but deflection तो बराबर होगा. तो बेटा here YB in AB will be equal to YB in BC. YB in AB will be equal to YB in BC. Can't we take P by 2 P by 2? अरे यार मेरे भाई एक बात बताओ, आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है कि जबरदस्ती का डिफिकल्ट करना है? आपको कान ऐसे पकड़ना है कि घुमा के दो गठान बांध के फिर वापस से पकड़ना है? आप लोग क्यों उल्टा सोचते हो हमेशा? क्वेश्चंस पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी सिंपल चीज को और डिफिकल्ट बनाएं. ठीक है, आपको डिफिकल्ट चीजों को सिंपल बनाने के लिए दिमाग लगाना है. जो ऑलरेडी सिंपल है उसको डिफिकल्ट बनाने के लिए दिमाग मत लगाओ. ठीक है, तो यहाँ P by 2 करना है, कर लो, लेकिन डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो क्वेश्चन को? Why you are complicating question? So don't complicate the things. P लगाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई लोड लगाने की जरूरत नहीं है ना. P by 2 करके उसको डिफिकल्ट करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके,
So now beta YB in AB and YB in AC BC will be equal. अब AB में the deflection at B will be due to P and RB. P की वजह से downward, so it will be PL. Sorry, the length is L by 2. Okay, the length is L by 2. So this will be P into L by 2 whole cube by 3EI. RB की वजह से अपवर्ड, तो माइनस RB इंटू L by 2 whole cube by 3EI equal to YB in BC. अब YB in BC will be only due to this RB and that will be downward. Okay, so what will be this? This will become RB L by 2 whole cube by 3EI. Understand my sign convention. This is downward, this is upward, this is downward. So positive, negative, positive. Okay. Now beta understand L by 2 whole cube, L by 2 whole cube, 3EI, everything is cancelled. तो यहाँ पे क्या बचेगा? P minus RB equal to RB. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 2RB equals to P. तो RB will be equal to P by 2. RB will be equal to P by 2. इतना आ रहा है? RB is equal to P by 2. Now once I got RB, I can calculate YB either from AB or from BC. या तो AB से निकाल लो या तो BC से निकाल लो, एक ही चीज होगी. ओके, AB से भी निकाल सकते हो, BC से भी निकाल सकते हो. So I will calculate from BC, है ना, क्योंकि आसान है. तो BC में तो यहाँ पे एक ही लोड लग रहा है RB, ठीक है, सेम ही चीज आएगी यार. P माइनस RB करोगे तो यहाँ पे भी वही आएगा. तो P by 2 into L by 2 whole cube by 3EI. तो YB कितना आ रहा है? PL क्यूब बाय, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, 16 into 3 48, है ना. PL क्यूब बाय 48EI, PL क्यूब बाय 48EI. Are you getting PL क्यूब बाय 48EI? PL क्यूब बाय 48EI. Are you getting PL cube by 48 EI? You can calculate deflection also. Now deflection may or may not be equal. मैंने बोला था इस केस में जहां तक मेरे को पता है equal आएगा. Okay, but magnitude will be equal. Directions will be opposite. Is it clear? Yes, yes, yes. Okay, okay, okay. So beta, this is statically indeterminate beams. We have seen so many questions, right? अब बेटा एक question है which is this one, a super question. ठीक है, super question है, बहुत interesting question है. Two beams of rigidity EI are connected by a linear spring as shown in figure, following figure. For a load P as shown in figure, the percentage of the applied load P carried by the spring is. Now बेटा ये एक super question है, बहुत interesting question है, but I want you guys to solve this on your own. मैं चाहता हूं कि आप लोग ये खुद से attempt करके खुद से बनाओ. दो सिंपली सपोर्टेड बीम है, दो सिंपली सपोर्टेड बीम है जिनको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, सो आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन. मैं यहां पे पॉइंट्स के नाम दे देता हूं ताकि कल जब हम लोग अपना सॉल्यूशन डिस्कस करें तो कोई कंफ्यूजन ना हो. तो ए बी सी, ठीक है, एंड लेट मी कॉल दिस पी क्यू आर. ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर. ओके, सो बेटा टुमारो व्हेन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन तब मैं YB बोलूंगा, YQ बोलूंगा, तो आप लोग को भी YB और YQ ही चेक करना है. ठीक है, सो बेटा दिस इज द प्रॉब्लम. सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन. दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू. ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है. कल सबसे पहले क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड देन टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. टुमारो at 7:30 p.m. at 7:30 p.m. we are starting torsion in circular shafts, which is a very important chapter for all the mechanical engineering students. ठीक है, mechanical engineering students के लिए ये बहुत important है, torsion in circular shaft. Okay, so we are going to study torsion in circular shaft from tomorrow. Okay, so this was all for deflection of beams. बेटा deflection of beams के चार सवाल बना, चार YouTube लेक्चर किए हैं हम लोगों ने और 2 DPP की हैं और कल एक और DPP होने वाली है. टुडे वी सॉ हाउ टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला. ठीक है, एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द डायरेक्ट फॉर्मूला इन टेबुलर फॉर्म. तो बेटा यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस एंड डायरेक्टली यू कैन स्टिक इट ऑन योर वॉल एंड रिमेंबर देम. ठीक है, तो बेटा ये
6 फॉर्मूले बस आपको याद करने हैं, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. ओके, नथिंग एल्स, जस्ट रिमेंबर दिस 6 फॉर्मूला. एंड देन आई टोल्ड यू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देन आई टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस भी कराए. देन we discuss this concept where we can directly transfer the force, right, from A to C, and then I explained why we can't transfer the force in that question. ठीक है, then Maxwell's reciprocal theorem we saw, then we saw this rigidity wala rigid beam wala, then impact factor wala question, then we saw statically indeterminate beam. So today we solved a lot of very important concepts. Okay, now tomorrow we are going to start torsion in circular shaft, and tomorrow we also have a DPP. कल हमारी एक DPP है, deflection of beams part 3. Okay, DPP part 3, and this is Unacademy free special class. This will not be on YouTube. Unacademy free special class tomorrow at 4 PM. कल होगी 4 बजे इवनिंग 4 PM. लिंक कहां मिलेगी? तो बेटा लिंक आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे. जस्ट फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल अप्रूव 10 and you will get the link. और बेटा you can download the link from tinyurl.com/approve10. मैंने लिंक डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक्सेल शीट में ही डाल दी है. Strength of material Excel sheet you open, you will get the PDF of this particular lecture and you will also get the link of the DPP. ठीक है, और बेटा just follow my telegram channel, you will not have to find any link. अगर आप telegram channel follow करोगे तो कोई link विंक ढूंढने की जरूरत नहीं है. Time to time you will get the notification. Okay, and बेटा a very important thing, if you want to score good in exam, if you want to increase the probability of scoring good, then beta be on Unacademy. And for final year student and pass out students who are preparing for GATE 2021, this is a very good opportunity. You can take 3 months Unacademy Plus subscription and you can revise all your subjects and you can appear in test series. There are a lot of test series going on. There are lots of crash courses going on. So beta jis bhi subject mein you are weak, if you are weak in any subject, if you want to make that subject good, if you want to make that subject strong, if you want to revise the old subjects, if you want to practice lots of questions, then you can take the 3 months subscription on Unacademy and come to Unacademy. What you are going to get beta? You are going to get test series, you are going to get doubt solving, and you are going to get crash courses. So in the last 3 months, आप last 3 months में आप रिवीजन कर सकते हो. ओके, यू कैन रिवाइज द सब्जेक्ट्स एंड यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स. जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के वो सब आप लोग क्लियर करवा सकते हो. 3 महीने का टाइम है बेटा. दिस आर द लास्ट 3 months वेयर यू कैन बूस्ट योर रैंक. आप यहाँ पे थोड़ी और मेहनत मार के अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हो. सो दोज ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GATE 21, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी. टेक 3 months सब्सक्रिप्शन एंड कम टू योर डाउट क्लियरिंग सॉल्यूशंस. ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशंस अटेंड करो ताकि आपको यहां अलग से डाउट सॉल्विंग के कोर्सेज भी हैं. ओके, देन यू हैव क्रैश कोर्सेज वेयर यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड यू हैव टेस्ट सीरीज. सो यू आर गोइंग टू गेट ऑल दिस पैकेज. ओके, टेक 3 months सब्सक्रिप्शन राइट नाउ. ओके, and those of you who are preparing for GATE 22 and 23, you can take 1 year, 1.5 year or 2 year subscription plan. What you are going to get, understand beta, you are going to get live polls and leaderboard. So whenever there is an MCQ question, you can answer in that live polling and the leaderboard will tell you the rank and timing, and this is going to improve your problem solving skill, MCQ question solving skill. Okay, then we have live interaction. You can interact with the teacher. आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करके अपने डाउट जो है तुरंत सॉल्व करवा सकते हो. आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट आता है किसी भी कॉन्सेप्ट में, सर यहाँ डाउनवर्ड क्यों लग रहा है, अपवर्ड क्यों नहीं हो रहा, सर ये प्लस क्यों है, माइनस क्यों नहीं है, तो ये डाउट्स आपके रह जाते हैं और ये डाउट रह जाने की वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, आप रट्टा मार लेते हो, वो गलत है, एग्जाम में फंस जाओगे. तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. आपको इतनी इंटरेक्टिव लगेगी क्लास कि आपको लगेगा यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर. दैट्स हाउ इंटरेक्टिव द क्लासेस आर ऑन Unacademy. ओके, एंड बेटा doubt solving is very important in Unacademy. We have dedicated doubt clearing sessions. Okay,
we clear the doubts in the live classes, regular classes, but we also have dedicated doubt clearing session. Every fourth lecture will be a doubt clearing session where you can clear all your doubts. This lecture is dedicated only for doubts, okay? And solving doubts, sending your doubts are also very easy. यहाँ पे आप अपने डाउट्स को क्वेश्चन के फॉर्म में इमेज लेके, पिक्चर लेके, फोन से पिक्चर खींच के भेज सकते हो एंड द टीचर विल क्लियर योर डाउट इन द क्लास, ओके? एंड बेटा द बेस्ट थिंग, टीचर चेंज एंड बैच चेंज. यहां पे यू हैव मल्टीपल बैचेस बाय मल्टीपल टीचर्स. एक ही अलग अलग टीचर जो है एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आपको जिस टीचर से पढ़ना है उससे पढ़ सकते हो, मल्टीपल टीचर्स से पढ़ सकते हो, मल्टीपल बैचेस में एडमिशन ले सकते हो. सो कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से बैच में पढ़ना है, इट इज अप टू यू. दैट्स हाउ फ्लेक्सिबल इज द कोर्स हियर, ओके? एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टू डिफरेंट स्ट्रीम्स, एमई से भी दे रहे हो, एक्सी से भी दे रहे हो, you can get into both the batches, okay? आप गेट के लिए भी पढ़ रहे हो, ईएसई के लिए भी पढ़ रहे हो, पीएसयूज के लिए भी पढ़ रहे हो. मान लो आपने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया अभी और आपने गेट दे दिया 21 में, उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन खत्म नहीं हो रहा है, बैचेस खत्म नहीं हो रही है. यू हैव ईएसई बैच, you have PSU batch, okay? So you can take part in all these batches. These are some of my batches. For example, I have all other batches also, but I can't show all of them in one page, so that's why I'm not showing them. So there are multiple batches by multiple teachers, so take full advantage of these batches, okay? So beta, be on Unacademy Plus right now. If you are in final year or if you are a dropper, then beta take 3 months subscription and revise your subjects with us. And if you are in second year or third year and you want to prepare for 22 or 23, then take 1 year subscription, 1.5 year subscription or 2 year subscription using the code APPROVED10. This is the code you need so that you can get 10% off. So 1 year subscription fee 27,225, 2 year 34,650, sorry, 1.5 year 34,650, 2 year 39,600, and look at the per month cost 1650, 1920, 2270. तो बेटा इस कॉस्ट में लोगों का पेट्रोल भी नहीं आता है 1 महीने का अगर वो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं. That's how affordable this is. So if you want to prepare with us and if you need a complete package, अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए, आपको सारी चीजें एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये देखूं वो देखूं, आपको अगर डीपीपीस चाहिए, आपको अगर डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहिए, देन बेटा कम टू अनअकैडमी. आपको इतनी बैचेस मिलेंगे, इतने कोर्सेज मिलेंगे, इतने टीचर्स मिलेंगे, आपके पास इतना ज्ञान का भंडार रहेगा कि आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैंने गलती की यहां आके. That's a promise, okay? So beta, don't forget to use this code because this is a code which will connect you with me. Whenever you will be using this code, आप जब भी ये कोड यूज करोगे तो बेटा मेरे को भी नोटिफिकेशन आएगा एंड वी विल बी कनेक्टेड टुगेदर. सो टुगेदर वी आर गोइंग टू मेक दिस जर्नी. मैं आपके साथ रहूंगा पूरे टाइम, आपको गाइड करता रहूंगा, आपको मेंटर करता रहूंगा. यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम ऑन अनअकैडमी प्लस. दैट्स अ प्रॉमिस, ओके? सो आई विल सी यू सून ऑन अनअकैडमी प्लस. टिल देन please hit the like button, share the link, subscribe and press the bell icon. Thank you so much. Have a great day. अब great day क्या हो गया, अब तो night हो गई. Thank you so much. Good night. Take care. Bye bye.